Good morning students. How are you all? I am Jyoti Arya from Great Christian Public School. So let's start the class. So students, in the last class we have discussed about the topic India at a glance. Last class में हमने कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ा था इंडिया के बारे में, एक व्यू देखा था इंडिया के बारे में. सो टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक इज़ फर्स्ट इन इंडिया. So let's start the topic. So you can see a picture on the screen. Can you identify this person? Yes. So the picture is of Pandit Jawaharlal Nehru. So Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. So in today's topic we will discuss फर्स्ट इन इंडिया मीन्स इंडिया में जो सबसे पहले थे. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू. नाउ ही इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ स्टूडेंट, कैन यू गेस दिस पर्सन? He was the first Governor General of Independent India. Who was the first Governor General of Independent India? Lord Mountbatten. So he is Mr. Lord Mountbatten, the first Governor General of Independent India. Now he is Dr. S. Radhakrishnan, Sarvapalli Radhakrishnan. He was the first Vice President of India. So who was the first Vice President of India? Dr. S. Radhakrishnan. Next is Maulana Abul Kalam Azad. So he was the first Education Minister of India. Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of India. Now he is Mr. Hiralal J. Kania. He was the first Chief Justice of India, the first Chief Justice of Supreme Court. Mr. Hiralal J. Kania. दिस पिक्चर यू कैन ईज़िली रिकगनाइज्ड. ये पिक्चर तो आपने बहुत आसानी से रिकगनाइज कर लिया होगा. येस, ही इज़ रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन 1913. रविंद्रनाथ टैगोर. एंड वन मोर थिंग ही हैज़ डिस्कवर्ड. व्हाट? येस, आवर नेशनल एंथम जन गण मन, वो भी इन्होंने ही लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट इज ही इज C.V. रमन, द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज़. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1930. 1930 में डॉक्टर C.V. रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था for the great achievement in the field of science and technology. Now who is he? Yes, he is the first Indian astronaut or cosmonaut Rakesh Sharma. He is the first man to land on the moon. The first cosmonaut Rakesh Sharma in 1984. Can you know this lady? Yes, she is Mrs. Kiran Bedi, IPS officer. She was the first woman IPS officer. What is IPS? What is the full form of IPS? Indian Police Service. So she was the IPS officer, first woman IPS officer, Kiran Bedi. She is from
अमृतसर, पंजाब. Now who is she? She was the first Indian woman correspondent. Kalpana Chawla. She is from Haryana. Karnal, Haryana. Kalpana Chawla. Now can you guess this person? He is Mihir Sen. He was the first Indian to swim across English Channel. ये फर्स्ट इंडियन थे जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था. मिहिर सेन इन 1966. नाउ इन विच सिटी वेयर फर्स्ट एशियन गेम्स वेयर प्लेड. कौन सी पहली सिटी थी इंडिया की जहां फर्स्ट एशियन गेम्स खेला गया था. द फर्स्ट सिटी वॉज न्यू दिल्ली. और कौन से ईयर में खेला गया था. इन 1951. So New Delhi was the first city where first Asian Games were played in the year 1951. Now can you guess this lady? She is IAF officer Avni Chaturvedi. IAF means Indian Air Force. तो इनका क्या अचीवमेंट रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. She was the first इंडियन वुमन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट विदाउट को पायलट. ये पहली IAF ऑफिसर हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ाया है. विदाउट को पायलट मतलब को पायलट के बिना इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया. तो वो एक पहली इंडियन वुमन है. IAF ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी. शी इज़ फ्रॉम रीवा, मध्य प्रदेश. Now he is Somnath Sharma, the first Indian to get Paramveer Chakra. Somnath Sharma. Now he is the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. So Sardar Vallabhbhai Patel was the first Home Minister of India. He is also known as the Iron Man of India. आयरन मैन ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं. लौह पुरुष. लौह पुरुष किसे बोला गया है. सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे. नाउ ही इज J.R.D. Tata. Who is J.R.D. Tata? He was the first Indian pilot in 1929. J.R.D. Tata. So these are the first in India. This is the first part, and in the next part I will provide you some more details and information. So I will give the question answer related to this topic in your WhatsApp group. You have to write in your GK notebook, and students, you have to recognize the face also. That's why I have shown the face, so that in the exam if I will give you the face, you have to identify the person name with their achievements. So students, the class is over. We will meet tomorrow with the next topic. Till then, take care. Bye.